So today we are going to discuss in this video, we are going to discuss about the cell chapter. The remaining chapter we are going to cover in this video, and it is the part second, and the part third is going to come on Thursday. So let's get started. So today we are going to talk about the unicellular organisms and multicellular organisms, and then we will talk about cell membrane, then nucleus, then we will talk about mitochondria, and then we will do some questions. So let's get started. So if you haven't watched part 1 yet, you can watch it. It is on our channel, and you can search Arnav Yadav cell, so it will come. So this is part 2, so let's get started. So we have to understand till now that what are eukaryotic cell and prokaryotic cell, who discovered the cell, and who add the cell theory, what is cell, and this all level. And now we are going to learn about difference between unicellular and multicellular organisms. So unicellular organisms can be defined as the living organism which contain only of a single unicellular organisms are defined as the living organism which consist only of one single cell. The single cells are capable of performing different life processes or cellular activities. So let me explain you this in short. Like एक cell है, this is one prokaryotic cell. So see what mostly happens, like in prokaryotic cell they are mostly unicellular. तो ये unicellular है, and it performs all the actions. वो खुद perform कर रहा है, like it will digest its food self, it will make its food self, it will protect itself, it will control its function self, it will do all the things self, it will respire itself. So ऐसे organisms जो कि वन सेल है, उनमें वन सेल है, they are based on one cell, like amoeba is also a unicellular organism. So this is unicellular organism, और ये कैपेबल होते हैं सारे जो सेल में एक्टिविटीज करने होते हैं उनके कैपेबल होते हैं. So like most of the prokaryotic cell are the unicellular ones. Now let's come to multicellular. So what is multicellular organisms? Multicellular organisms can be defined as the living organism which consists of multiple cells with the distinct cell organelles. It is capable of perform different life processes or separate cellular activities inside a body. So it want to say like that. I explain it short. So like most of the multicellular organisms are eukaryotic cells, and eukaryotic cells इन अ बॉडी लाइक वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स होंगे और तब बन के एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, और हर एक सेल जो होगा वो अपना डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करेगा. लाइक हमारे जो हार्ट के सेल्स है वो हार्ट का जो प्रोसेस करेंगे, हमारे ब्रेन नर्व सेल है वो नर्व वाला प्रोसेस करेंगे, हमारे जो स्टोमक में जो सेल्स हैं वो स्टोमक का काम करेंगे, एंड जो हमारी स्किन पे सेल्स हैं वो स्किन का काम करेंगे. देन इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वी आर मल्टी सेलर, हमारे अंदर काफी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं. So this is the mean of multicellular organisms. So let's move ahead. So we have discussed about the unicellular and multicellular organism. If you want to take the notes, you can take from here. So next is, now we will do the cell organelles. We will do the cell organelles. There we will do the first is cell membrane, then we will do the nucleus, and then we will do mitochondria, and remaining we will do in the next video. So let's discuss about cell membrane. So what is a cell membrane?
So let me give you an example. Cell membrane is the protective covering of the cell which protects the cell from outside things like अगर कोई bacteria है तो cell membrane protects it. So like I am explaining you, like we have the skin. वो स्किन क्या है, वो स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है. एंड इट आल्सो हैज सम होल्स ऑफ ऑयल एंड जो स्वेट उनमें से जाता है. एंड इट आल्सो एक्सचेंजेस द थिंग्स, लाइक स्किन भी चेंजेस एक्सचेंज कर रही है. इन सेल मेम्ब्रेन केस आल्सो सेल मेम्ब्रेन भी चीजें एक्सचेंज करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा. सो जो वो एक्सचेंज क्या करता है, लाइक वाटर, दिस इज अ सेल. अब इसको वाटर की नीड है तो H2O बाहर है लेकिन H2O अंदर नहीं है. तो बेसिक फंडामेंटल रूल है कि एक जगह अगर प्रेशर कम है और एक जगह अगर प्रेशर ज़्यादा है किसी भी चीज़ का तो ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर के अंदर आएगा. तो उसी रूल को फॉलो करते हुए ज़्यादा H2O इसके अंदर आ जाएगा. एंड बाय दैट रूल वी कैन आल्सो से लाइक इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फॉर्म है बट आउटसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है. तो ये इससे बाहर कैसे देगा, तो CO2 अगर अभी अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है तो अंदर से CO2 बाहर चला जाएगा. अंडरस्टूड. तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा द सेल मेम्ब्रेन एक्सचेंजेस द स्टफ बिटवीन द सेल्स. So this is the notes. We can see cell membranes are also called plasma membranes. Fact selectively permeable, allow certain materials to move in in and out of the cell when needed, but keeps other material from crossing the membrane. Made of phospholipid bilayer. सो फोस्फोलिपिड जो लेयर है, लिपिड मीन्स वाटर एंड फोस्फो वाली ये जो लेयर है इट इज द मेन थिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. लाइक यू कैन सी in this image there is the phospholipid layer. You can see this is the phospholipid layer which is the main thing of the cell. So you can see it. Water soluble phosphate head, hydrophobic, water insoluble fatty acid tail, hydrophobic. तो जो फोस्फेट का हेड होता है वो तो वाटर सोल्यूबल होता है और जो टेल होती है वो इनसोल्यूबल होती है. हैज वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स मिक्सड इनटू द ब्लेयर्स. लाइक जो ये ब्लेयर है सेल मेम्ब्रेन का इसमें काफी सारी चीजें मिक्सड है. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव द कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन हियर, वी हैव द प्रोटीन्स हियर, and then we also have the cholesterol here. So this is the cholesterol, and we also have like much more things, like you can see hydrophobic tail, hydrophobic heads, and cell membrane receptors, also proteins of here. So you can see it. So if you see that in the cell membrane is mostly like a protective covering and helps in the exchange of things between the cell and the outside environment. So there is a question. The cell membrane is primarily made of, we just a few seconds ago we discussed this question. The question is the cell membrane is made primarily of, किस चीज से सेल मेम्ब्रेन ज्यादातर बनी होती है. योर ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट, बी इज न्यूक्लिक एसिड, सी इज प्रोटीन एंड डी इज फॉस्फोलिपिड्स. सो द करेक्ट आंसर इज डी, फॉस्फोलिपिड्स. सो you can see made of phospholipid bilayer. You can also check the notes. In these notes there is answer, and most of the thing is made of phospholipid bilayer. So phospholipid is the correct answer. Understood? So now we will see the next part of the cell, which is known as the brain of the cell. So let me ask you one very simple question. What is the work of our brain? The work of our brain is to control all the body functions, control all the body movements, and do locomotion, and learn something and store something. The brain takes the DNA. The brain
gives the information to the body. Brain saves the all the information of the body. So this is the main thing of the brain. So human body के अंदर तो brain है, like in human there is brain, but for cells, cell के लिए क्या होता है, for cells there is nucleus. Nucleus is called the brain of the cell. So I tell you in our first part, the nucleus was discovered by Robert Brown, and it is the most important part of the eukaryotic cell. So nucleus is like the brain of the cell which controls everything in the cell. You can take note from here. Structure of the nucleus is separated from its surrounding cytoplasm by a double layer nuclear membrane. So let me teach you another thing, like there is a word called cytoplasm. So what is cytoplasm? Like let me explain you. You take a bucket and put your kitchen utensils into it. Your kitchen utensils you put into it and shake it. And if you shake it, the utensils will bunch on each other and they will get distorted and the voice will come too high. So like in the case of cell, अगर सेल में ये साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, देन दे विल डिस्ट्रॉय इन देयर ओन सेल्फ. बट अगर हम इस बकेट में हनी मिक्स कर दे तो इफ यू मिक्स हनी इन दिस बकेट, अगर हम इसमें हनी मिक्स कर देंगे, देन द सेल ऑर्गेनेलीज इवन इफ दे कोलाइड विद each other, then they will not make sound, they will not get hurt by each other. So this honey in the cell is known as cytoplasm, and it is the most important part of the cell. Let me tell you one more fact. The most important part of the cell is cytoplasm. तो काफी साइंटिस्ट ने रिसर्च करा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस हटाया तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हटाया तो क्या होगा, एंड द रिजल्ट वाज कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में जंग छिड़ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है. बट देयर कम एन साइंटिस्ट, उसने साइटोप्लाज्म को ही रिमूव कर दिया, देन एंटायर सेल वाज डेड. पूरा सेल डेड था, बस न्यूक्लियस वाज लिविंग. व्हाई न्यूक्लियस वाज लिविंग? बिकॉज न्यूक्लियस हैज इट्स सेल्फ साइटोप्लाज्म, उसके अंदर उसका खुद का साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए वो बचा रह गया. दिस इज द cause that nucleus saved. So this is the most important part of the cell, cytoplasm. Then cytoplasm is present in the nucleus also of the cell, and the nucleus has an inner membrane layer in contact with the nucleoplasm. So nucleoplasm जो इसकी second layer है, like this is the nucleoplasm there right over here. वो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, उससे वो कनेक्ट रहती है, कनेक्टेड. So then we have the other things like RNA and ribosomes leave the nucleus through these pores, and this notes you can take also. Like अब जो हमारा ये है न्यूक्लियस, उसमें मेन जो आपका होता है न्यूक्लियस, and in this we have the DNA, we have the RNA, and we have the RNA. There is the endoplasmic reticulum also there, ताकि वो उस पे food transplant कर सके. We will learn it later in the part 3. So let's move on now to DNA and RNA. DNA and RNA are the nucleic material of a cell which are present in the cells. Like you can see here, this is the cell, and this has chromosomes, and in the chromosomes we have genes. What we have? Genes. In the genes we have DNA. In the genes we have DNA. Like this is if we have a chromosome like this one, and इसमें काफी ज्यादा फोल्ड होके इसमें
होती है जीन्स. अब जीन्स क्या होती है, लाइक दिस इज एन RNA जीन, एंड दिस फोटो यू मे नो, यू हैव सीन इट मैनी टाइम्स. दिस इज द DNA जीन, ये DNA की जीन है. सो ये एक जीन होती है, एंड इन दैट जीन देयर लाइज, अब ये कैसे बनती है जीन, देयर आर, यू कैन सी 4 थिंग्स. So in that each segment of a DNA is called a gene, and they are made of like adenosine, cytosine, thymine, guanine. Like A is equal to C and T is equal to G. So this is the basic fundamental here. No, so दिस इज द बेसिक फंडामेंटल. एंड लाइक जितनी मात्रा में A होगा उतनी मात्रा में C होगा, जितनी मात्रा में T होगा और उतनी मात्रा में G होगा, एंड इट इज बिकम द नाइट्रोजन बेस. वो नाइट्रोजन बेस बन जाता है. एंड अब RNA, सो वन मोर फैक्ट इज दैट DNA इज डबल हेलिक्स. वो डबल होता है, लाइक वन दिस एंड वन दिस, बट RNA इज सिंगल हेलिक्स. एंड RNA में बस थोड़ा सा चेंज होता है, लाइक ऑल द 3 आर सेम एक्सेप्ट द ग्वानीन. वो जो हम एंड एक्सेप्ट द ग्वानीन, sorry, except the uracil, except the uracil, all the things are same in the RNA and the DNA as well. So DNA and RNA are the nucleic material of the cell which help the cell to reproduce. Now let's talk about another part of the cell which is known as mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Like let me give an example. एक सिटी का पावर हाउस क्या होगा, इट्स कनेक्टिविटी. लाइक एक जगह से पावर ग्रिड है जो वो हर जगह से सप्लाई कर रही है. अगर वो पावर ग्रिड स्विच ऑफ हो गई तो हर जगह सप्लाई भी रुक जाएगी. सो यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. अब सिटी को छोड़ के हम सेल ले लेते हैं और पावर ग्रिड को छोड़ के हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं. सो सेम थिंग. अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज DNA, it has the fluid, the matrix fluid, it has the inner membrane space, it has the ribosomes, it has the cristaceae, it has the outer membrane and inner membrane. Functions of the mitochondria. The functions of the mitochondria is energy transfer of the cell, synthesis of ATP. So what is ATP? So ATP is adenines triphosphate. It is called the ATP, and it also does the extra mitochondrial interference. mDNA contains plasma genes, extra chromosome genes transmitted from mother to offspring. Synthesis of mDNA, RNA and protein. तो mDNA, RNA और जो प्रोटीन है वो भी ये बनाता है. Synthesis 13 different types of peptides in human. This is the functions of the mitochondria. So let's move ahead. So now we will do some questions. So based on the part first, this is question. Who saw the first cells? तो सबसे पहला जो सेल है वो किसने देखा था? So सबसे your options are Hooke, Swan, Van Leeuwenhoek and Jensen. So इसमें से करेक्ट आंसर है A, which is Hooke. Hooke ने सबसे पहले सेल्स देखे थे. हालांकि उसने डेड सेल्स देखे थे. He saw dead cells, but his उसने सबसे पहले देखे तो सेल्स ही थे, वो सेल्स थे भले ही वो डेड हों. So answer is Hooke in 1665. Who was the first person to see the living cells? लिविंग सेल्स को देखने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था? सो डेड सेल के लिए था हुक, एंड फर्स्ट पर्सन he was Antony Leeuwenhoek. So there is von Leeuwenhoek only. Antony they have not put. So von Leeuwenhoek has saw the first living cells in 1674. And
Who is credited with the development of the modern cell theory? Sheldon, Schwann, Virchow, and all of these. So if you know that Virchow proposed the cell theory, then Sheldon and Schwann added their things. But all this contributed, na? Then the answer D is correct. That all the scientists contributed to the modern cell theory. So we have done the questions based on the cell theory. So now we will do questions based on nucleus. Which type of cell does not have a nucleus? इनमें से कौन से टाइप के सेल पे के पास न्यूक्लियस नहीं होता? Animal cell and plant cell leave that. Eukaryotic cell have a well-defined nucleus. Only prokaryotic cells have a not defined nucleus. Not defined न्यूक्लियस. वो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, पूरी तरह से न्यूक्लियस नहीं होता है. सो आंसर बी इज करेक्ट हियर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? लाइक यू कैन सी देयर इन द नोट्स, you can find out here there is an line which says that ribosomes are responsible. See, you can see their RNA and ribosomes live through these pores. So अगर RNA और ribosomes पोर से निकल रहे हैं तो वो बन भी तो पोर के अंदर ही होंगे. And then they are made in nucleus. They are made in nucleus. Nucleus part of the cell. What does nucleus do? So the nucleus doesn't there is not main function of the nucleus, but the most correct answer is protect the DNA को protect करता है. So our next is quiz and worksheet of major structural components of cell membrane. तो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से. विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट फाउंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. सो वी कैन सी इन द phospholipids हमारे पास हैं. We have the phospholipids, we have the proteins also, and we have the carbohydrate also. Then all of the answers are correct. So all these are found in cell membrane. So our first answer correct. Which component of the cell membrane is responsible of transport into or out of the cell? Very easy question. Like सेल्स के सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट इन और आउट करने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोलिपिड्स. we discussed it. Like you can see here there is water soluble phosphohead. Water soluble मतलब water soluble है तो it takes out and goes in. water soluble वो है. Then and selectively permeable, वो selectivity permeable भी होती है when crossing out of the cell. You can see here. So the answer is phospholipids. Which component of the cell membrane functions to link together? कौन सा component of cell membrane एक साथ function करता है, एक साथ काम करने के लिए? Phospholipids, carbohydrates, proteins. None of these choices is correct. So the correct answer is the proteins. So I hope you understand the video and the concept of nucleus and unicellular and multicellular organisms and the cell membrane and the mitochondria, and we discussed some questions here. So until then, keep studying and keep your studies going on and watch our videos. Subscribe to our channel and like our videos for more such videos. So until then, Jai Hind and Jai Bharat.